start with NPA and IRAC norms. When it comes to banking, you all know that how NPA is very important, how NPA is the headache. It is only because of NPA we are getting loan sanctioned in a delayed manner. Some of we are denied a loan facility only because the NPA concern in the bank. Because there are multiple losses happens to a bank when one loan slips to NPA. Can anyone tell me what are the loss a banker or a bank has to incur if there is NPA of 1 rupees? क्या क्या लॉस हो सकते हैं 1 रुपए का अगर एनपीए होता है अमाउंट में, तो बैंक को किस किस तरह से नुकसान होता है? मल्टीपल फ्रंट में बैंक को नुकसान होता है। रेपुटेशन लॉस तो नहीं होता है, बैंक का रेपुटेशन लॉस नहीं होता है, जिसने एनपीए किया है उसका रेपुटेशन लॉस होता है। पहला चीज है कि जितना मान लीजिए 1 लाख का नॉट 2 रुपीज, एवरी 1 रुपी इज गॉन इनटू एनपीए, ऑलमोस्ट 3 to 4 रुपीज इज लॉस्ट बाय द बैंक। हाउ? पॉइंट नंबर 1 इज, लेट मी टेल यू, first, this same amount that has slipped to NPA is a instant loss for the bank, right? 1 rupees has slipped to NPA is equal to 1 rupees is lost, right? Then if it has slipped to doubtful or loss status, then you have to do a provisioning of additional ₹1. आपको 1 रुपये का प्रोविजनिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? right? And this 1 rupee is not yours. You borrowed this 1 rupee from others, right? ये आपका 1 रुपया, आप ही का 1 रुपया नहीं है, आप ये 1 रुपया किसी से उधार लेके किसी और को देते हो। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? आकाश, स्लाइड शो नहीं हो रहा है, प्लीज लॉग आउट एंड लॉग इन। प्रोविजनिंग मैं बताऊंगा, आगे जाके बताऊंगा प्रोविजनिंग क्या है, आगे बताऊंगा। आप पेशेंस, बता रहा हूं, ठीक है? फिर पैसा कि आपका नहीं है ना, मैं 1 रुपया किसी से मांग कर लाया था मैं, ठीक है? उसको मुझे 1.5 रुपए वापस करने होंगे, वो थोड़ी 1 रुपए में मान जाएगा। तो जो इंटरेस्ट वो डिपोजिटर को मुझे देना होगा या फिर मेरे इन्वेस्टर को देना होगा, वो 0.5 पैसा है, ठीक है? देन द अपॉर्चुनिटी लॉस, ये 1 रुपया अगर सही समय पे मेरे पास आता तो मैं क्या करता? इफ दैट 1 रुपी वुड हैव बीन रिटर्न्ड टू मी, व्हाट आई वुड हैव डन? I would have invested it further to generate more money, right? Realme 6 पूछ रहे हैं ये आरआरबी में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। आरआरबी में थोड़ी एनपीए होता है, आरआरबी में थोड़ी कोई लोन देता है, बिल्कुल नहीं आएगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आरआरबी में लोन नहीं होता है ना, आरआरबी में थोड़ी एनपीए होता है, आरआरबी में थोड़ी बैंकिंग पूछेगा कि एनपीए आएगा। ठीक है, अगर नहीं पूछेगा बैंकिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा। आरआरबी में अगर लोन एनपीए नहीं होता होगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी लॉस 0.5, गॉट इट और नॉट? मोर देन 3 रुपीज इज लॉस्ट अगेंस्ट एवरी 1 रुपी इज लॉस्ट। नो नो, नॉट 2 रुपीज। आपको जनरल जो बैंकिंग पढ़ाते हैं वो बताएंगे 2 रुपए, नॉलेजिस्ट पर मैं नहीं बताऊंगा कि 2 रुपए लॉस हो रहा है, 3 रुपए से ज्यादा लॉस हो रहा है, मैं और 2 रुपए कैसे लॉस हो रहा है वो भी बता सकता हूं, ठीक है? जो जनरल बैंकिंग पढ़ता है वो बताएगा कि 1 रुपए के बदले 1 रुपए ही लॉस होगा। जो थोड़ा बहुत बैंकिंग जानता है वो बोलेगा कि नहीं, 1 रुपए के अगेंस्ट में 1 रुपए प्रोविजनिंग होगा तो 2 रुपए लॉस होगा। नहीं भाई, 3 रुपए से ज्यादा लॉस होता है, 3 रुपए से ज्यादा लॉस होता है, ठीक है? सर अपॉर्चुनिटी लॉस को रीडिफाइन करिए। बिल्कुल रीडिफाइन करता हूं। मेरा 1 रुपया अगर मुझे आप वापस कर देते सही समय पर, मैं क्या करता? उसको डबल कर देता 26 डेज में। लक्ष्मी चिट फंड याद है कि नहीं? मैं I can double that amount or not? If not double, I would have invested it, I would have given loan to somebody worthy of it, who would have been returned me 1.5 rupees over 3 years 4 years. तो that is opportunity loss. उस पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते थे। Got it or not? Provisioning is not a loss. Who told you provisioning is not a loss? Then why bankers are worried? जो प्रोविजनिंग आप करेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट थोड़ी मिलता है। नहीं तो हर कोई तो प्रोविजनिंग करके बैठता शांति में। प्रोविजनिंग, ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट, मोर सीआरआर, मोर एसएलआर रिक्वायरमेंट अगर बैंक का बढ़ जाता है तो बैंक लॉस में चला जाता है भाई।
उतना पैसा अगर वो प्रोविजनिंग में नहीं रखकर फिर से लोन देता, दे वुड हैव गॉन फॉर रीफाइनेंसिंग, रीलोनिंग, देन बैंक वुड हैव जनरेटेड a huge profit. Our special batches for Bank of Baroda's 2025 Specialist Officer is going to kickstart very soon. So don't waste your time. The course link and everything is available in the description. And as you all know that in last 1 year, there were multiple Bank of Baroda exams, and in all that 95% of selected students are directly from Knowledgist. Go and check out the success stories, and now time is to enjoy this sample session. Our classes is curated in such a way that even if you have a busy schedule, you can still grab it. Our live sessions are designed in the night and in the weekends. Also, if you miss them in 2 hours, the recording will be available. And in first hand, we have a complete pre-recorded batch. And everything is going to start from 5th of January because you have a very less time to prepare for this exam. So do join and now enjoy the class. प्रोविजनिंग अमाउंट रिजर्व की तरह रहता है, बट उसको बैंक इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उससे लोन नहीं दे सकता. सो एनपीए इज ए सरदर्द फॉर द बैंक, इज एन हेडेक फॉर द बैंक. What is NPA? If a loan or advance on which the principal and past due or interest is not paid for more than 90 days, we will treat it as an NPA. In agri loans, ये नॉर्मल टर्म लोन की बात हम कर रहे हैं. टर्म लोन में 90 दिन प्रिंसिपल ड्यू है, इंटरेस्ट ड्यू है, तो ये एनपीए है. बट इन केस ऑफ एग्री लोन, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन के लिए 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग टर्म क्रॉप लोन के लिए 1 क्रॉप सीजन. गेटिंग और नॉट? गेटिंग और नॉट माय डियर फ्रेंड्स, बताइए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एग्री लोन्स के लिए क्या है, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं. जैसे मेरे स्टूडेंट्स प्रो लेवल के हैं, बट आई वुड लव टू स्टार्ट विद द बेसिक लेवल, फिर धीरे धीरे हम ऊपर लेवल में जाएंगे, कोई बात नहीं है. Getting it? Then, in a CCOD case, we generally call it an NPA if the loan outstanding or if it is in out of order for more than 90 days. What is out of order? That means outstanding is more than the limit sanctioned. ठीक है? No credit in last 90 days, limit expires, not renewed for 60 days, then it is treated as NPA. ठीक है? Not renewed for 6 months, not renewed for 6 months, not 180 days, 6 months. So an asset divided into 2 types, standard asset and a non-performing asset. ठीक है? What is the difference between CCOD? CCOD क्या है? वो CCOD हम जनरल लोन के केस में पढ़ेंगे. सीसी इज ए कैश क्रेडिट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट इज ए टेम्पररी लिमिट सैंक्शनड अगेंस्ट योर सीसी. ठीक है, आपको टेम्पररी, आपका सीसी लिमिट चल रहा है 10 लाख का चल रहा है, बट अचानक से आपको 50,000 की जरूरत है, तो ओडी में सैंक्शन किया जाता है. उसके ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस, सीसी ओडी में डिफरेंस सब पढ़ेंगे. पहले जो स्लाइड में है वो देखते हैं. तो एसेट किस तरह का होता है? लॉन्ग टर्म क्रॉप ड्यूरेशन 1 क्रॉप सीजन. एक लॉन्ग टर्म जैसे आपके शुगर केन्स हैं, वो थोड़ी 3 महीने में खत्म हो जाता है, मगर जो पैडी है, ठीक है, जो व्हीट है, वो सब 3 महीने में खत्म हो जाता है. राइट? So an asset is divided into 2 types, standard asset, another is NPA. But before it turns into NPA, it is also categorized as SMA, specially mentioned account. ठीक है? Long term crops are generally annual crops. So SMA means, first SMA non-financial means there is no signal of stress. ठीक है? SMA 0 मतलब NPA कब होगा? आपने लोन का EMI 5 जनवरी को है, आपने नहीं दिया, वो 5 अप्रैल तक एनपीए होगा. बट ये 3 महीने में क्या वो लोन सही से चल रहा है? नहीं चल रहा है. देयर आर डिलेड पेमेंट्स. इज दैट लोन नाउ ए स्टैंडर्ड लोन? नो, इट हैज साइंस ऑफ स्ट्रेस. सो इट इज ए स्पेशली मेंशन्ड अकाउंट बिटवीन 0 to 90 days. 0 to first day of delay to 30 days, it is SMA 0. If delay is between 31 to 60 days, it is SMA 1. If it is 61 to 90 days, it is SMA 2. Got my point, my dear friends? Got my point? This was just a sample session. ये एक sample session ही था. complete session और पूरे syllabus के लिए आपको register करना होगा Knowledgist के dedicated course से. course का link and everything is available in the description, comment section.
also in your application and in your website. So don't hesitate to join from there. Thank you.